everything. You have to go through many aspects. So valuation, according to me, in my field is some part of it. My DD is higher than your DD. We call it as a due diligence. We have also processes. Somebody was asking, like, we call it as a standard work. Process is basically a standard work, like, you know, Domino Pizza, right? What they claim and blame. आपको जल्दी से जल्दी पिज्जा खाना है तो you call Domino, and what is their advertisement? 30 minutes or pizza free. So 30 minutes में they are managing everything, receiving customer call, writing down what customer wants, it goes to the kitchen, kitchen packs it, delivery boy takes it, he travels on the road and deliver to a right building and right place, right? So it is a process, it's a standard work, right? So it's also important in our field. This is my very favorite slide in the context of the workshop. I do assume that you have a high energy level, so efforts and courages are not enough without purpose and direction. I think for you, the purpose and direction is very clear. Okay. So efforts and courage is not enough, but you have to set the direction that, okay, week after week, month after month, quarter after quarter, and then you have to chase the team, right? So this is a favorite slide. With that, we are starting the valuation. I think coverage of this particular program is kept limited to a practical aspect of scientific financing and how the valuation can be used as a tool for risk mitigation. And that's what I think we were debating, that valuation, we want to know what is fair value, why the value differs, industrial property, I don't get it, right? So all this stuff we are going to talk. The first stuff, I think after the introduction round, we will talk about present status of NPA in India. Very brief to give you a gist. I know you know the subject very well. Valuation as a tool for risk management, bank valuation and risk management of NPA. These are the first topic, the collateral knowledge and valuation. This goes hand in hand. And finally, case study and your present query. After the case study, we'll have your queries also. And question answer, this is first half. Second half, after lunch, we will play something. Because you are now not that, managers and heads today. You are together as a, child, we will play together. After lunch, we'll have a small, So after lunch, we will have a small play. So second half is basic of valuation, valuation reports and importance, valuation and valuer, and know your valuer, the selection of valuer. So ready, everybody? I think for the student, I think one or two, just a small brief, what is valuation? There is three things in valuation: cost, price and value. Very simple, cost is defined as the resources sacrificed to produce or obtain an article or a product or things or a service. So cost, very simple terminology, that amount. Price is basically what is charged by the seller or provider of a product or services. Many times it is a function of time. Price is function of time. You know many examples with you. Value is often measured by usefulness or desirability of the value, is an estimate of the amount that people are able and willing to pay. Every word is important. Able and willing to pay for the commodity in question at some point of time. Every word is important. I think just you are starting for your knowledge. I think these three aspects you should be very clear: cost, price and value. I have to manually operate this. Okay. Simple example. Perceived value. This pen, the cost is $185 in Indian rupees, almost 10,000 rupees. So perceived value reflects more than just a functional benefit of a product. Sometimes you said that 5 crore, 7 crore and 9 crore. Maybe the person who came from Bombay, his perceived value was higher than what valuer was thinking. It's a perceived value. Sometimes people from outside, they find India cheaper. Perception. So just keep that as a thought process in your mind. So this is the idea of
giving you idea that perceived value. Now again, basics, value and valuation. Value as per Oxford is the worth of something compared to its price. Again, mind well, its value as per Oxford is worth of something compared to price. And valuation is basically, as per the Oxford definition, is an estimation of something worth, especially carried out by a professional valuer. That's why it is called valuation. Again, value is defined is the amount of money that people are able to and willing to pay for a commodity in question at some point of time. Same definition. But again, valuation as per definition is not an exact science. Valuation in terms of money, value attributed by them to the asset, their estimate, and this is a conclusion of the fact to be drawn from the evidence available. Digest it, I think, for a time being. It's not an exact science. And that's why you come across a lot of questions. Even you call 3 valuer and take the valuation report, you find the variations. If it is in the range of 10 to 12%, it's fine. Beyond it, you have to suspect, man, what is this, right? That's why it's sometimes it's art and science both. When I say it is not exact science, but it is science also, because they have the technical knowledge. Like if you go for a valuation of property, he has some knowledge, right? Civil engineering. Valuation is both art as well as science. So this again basic theoretical background. Again, valuation is derived by concluding from many parameters. You rightly said, there are a lot of things attached with the valuation, many parameters, and more specifically with the current relevant issue. This is the crux of the subject. The current relevant issues should be part of valuation report because they are updated. They know the latest, what is happening. Valuation is a basic check for making any monetary decisions, and I think we are doing it. Valuation is a time and purpose related. What is the time and what is the purpose? A sound valuation helps to maximum ROI, return on your investment or return on asset, security, and price recovery at a minimum asset procurement cost and default risk. So it's a scientific tool and we'll talk about it. Now coming to the topic of NPA. I think before we go to NPA, I think this gentleman has always influenced. Tell the truth boldly, whether it hurts or not. See, if you tell the truth, it will be present. If you tell the lie, it will be, every time you have to remember it. Now, present status of NPA in India. More than dozen banks reported an over 100% increase in their non-performing assets in 2011 and 12, year on year, YOY. And situation may get worse in current financial year. This data has come out now. You may be aware. You know that data, right? 2012 and 13. So this is more alarming than what is here, the current data. According to analysis done, and I think this is an important website, npasource.com. It gives you update what is happening. Useful web link. The total stressed asset in our banking system today, including the cost of restructured standard loans, are as high as 3.6 lakhs crore. So it's a big money. It's a big money. And it is 7 times the gross NPA of level 2005. So you can imagine the quantum by leaps and bounds. 50,486 crore. This is 2005. As per Economic Times dated 7th January 2013. Latest news. And that is why this workshop together as bankers and professionals, not only debating, but thinking that how do we action out. In corporate, we have standard dialogue. What are standard dialogue, you know? If you are not a part of solution, then you are a problem. You agree or disagree? I always tell my board or my general manager or VP, I said, if you are not a part of solution, you are a problem for me. Even if somebody comes to me with a problem, I always ask standard question. What is the object? What is the defect? When this happened? First time. Where this happened? How big is the impact?
इतना क्वेश्चन पूछेगा तो यू विल अंडरस्टैंड दैट बॉस इज आस्किंग मी in a right direction, right? So if you are not part of the solution, then you are a problem. So together we want to see that what best scientific aspect we bring forward in our banking, financing and recovery, and as a practicing valuer, Raju bhai, that how can we come close and be proactive on the subject, right? So a lot of calculations we are doing, right, on recovery and NPA. So let's stop on this calculation. Let's not dig deep into the statistics right now, that amount and money. Let us go direct to the topic of the program. Yeah, please. You can come in between anytime, Raju bhai. अच्छा, ये जो स्लाइड है, टेल द ट्रुथ बोल्डली वेदर इट हर्ट्स और नॉट, नेवर पॉन्डर टू वीकनेस, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ऐसे ही नहीं रखा है विवेकानंद जी के लिए, ये हमारे लिए ये स्लाइड इधर रखा है. एनपीए और फाइनेंसिंग में जो क्रेडिट वाले पीपल है या जो बैंक में है या वैल्यूअर है, जितना भी क्रेडिट के साथ कंसर्न है, उसको पहले बोल्डली एक्टिव होना है और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एजीएम साहब क्या कहेंगे, ऊपर बोर्ड में क्या होएगा, नीचे पार्टी का क्या होएगा, अपना जो फाइल ये कहता है, सब बात बाद में है. लेकिन जो पहले फैक्ट क्या कहता है, व्हाट इज द फैक्ट, वी हैव टू सी द फैक्ट फर्स्ट. जनरली एज अ वैल्यूअर मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो जब भी वैल्यूएशन के लिए बात होता है तो वैल्यूअर को सब बात जो होती है या जो फाइल मिलती है उसका माइंड भी बायस किया जाता है. वैल्यूअर को कभी बायस मत करो. और अभी अपना प्रैक्टिस है कभी भी कि वैल्यूअर को वैल्यूएशन रिपोर्ट देते हैं. हम जाएंगे कि भाई इसका प्रॉपर्टी डिटेल्स या डॉक्यूमेंट कि साहब आप फाइल में से रिपोर्ट ले लो, फाइल हमको दिया जाता है. क्यों? टाइम नहीं है, साहब के पास टाइम नहीं है. तो जब एनपीए शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? इधर से ही शुरू होता है कि आप जब फाइनेंस करते हैं, एक ये बुक में एक साइंटिफिक फाइनेंसिंग है, तो बिफोर जब क्रेडिट स्टार्ट होता है, तो क्रेडिट के स्टार्टिंग में ही कि आप कोई भी फाइल देखते हैं तो वैल्यूअर इज योर प्रोफेशनल एडवाइज़र. तो आप प्रोफेशनल एडवाइज़र को ही ओपिनियन दे देंगे दूसरे प्रोफेशनल का. आपको डॉक्टर का एक्सपीरियंस होएगा, डॉक्टर्स और एडवोकेट्स वो बोले कि पहले कहाँ चेक करवाया, ये क्या करवाया, क्यों करवाया. बाद में डॉक्टर का इंटरनल बात कभी सुना है? मैंने खुद सुना है. मेरा एक्चुअली आई वॉज एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन मेडिकल, लेकिन मैंने नहीं लिया था. मैंने खुद सुना है कि जब डॉक्टर एक दूसरे का कभी गलत नहीं कहेंगे, कितना भी गलत है. आपका मेरे इधर लेफ्ट ऑपरेशन हुआ है तो फोटो सब जो है इधर का सब दिखा के मेरे को ऑपरेशन टेबल पे सुलाया गया था. अभी मैं इतना तब ट्रॉमा में नहीं था, इसके लिए मेरे को बेनिफिट मिला. हिसाब आप देखो तो सही फोटो बाद में लास्ट में जो चीफ डॉक्टर ने देखा, बाद में मेरा साइड चेंज किया. तो जो होता है कि आप प्रोफेशनल है, जो जिसको हायर कर रहे हैं, जिसको फीस दे रहे हैं, उसको आप पहले से ही दे देते भाई ये वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लो, तो आपको क्या मिलेगा? दूसरे वैल्यूअर का रिपोर्ट आप देखे भाई पहले का ये है, दो है, तो आपको मिलेगा क्या? वही मिलेगा. तो वैल्यूअर जब आता है आपके पास तो उसको रिपोर्ट मत दीजिए, उसको प्रॉपर्टी टाइम दीजिए पहले तो कि भाई ये प्रॉपर्टी की फाइल है. और अभी तो हमारे पास स्कैनिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है कि जो भी फाइल आता है उसका जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है 2 या 5 चाहिए, आप स्कैन करके रखते हो तो एवरी 3 ईयर्स वही दे सकते हैं कि भाई ये लैंड डॉक्यूमेंट है, ये कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है, या ये मशीनरी परचेज डिटेल्स है. तो वैल्यू ये मतलब, और जो भी फैक्ट है, फैक्ट के साथ रहेंगे तो एनपीए कम होएगा, सॉल्यूशन जल्दी आएगा. थैंक यू राजू भाई. और वैल्यूएशन ये जो था, वैल्यूएशन इज एस्टिमेट, इज नॉट फाइनल. इसलिए ये हर 2 साल या 3 साल में हम वैल्यूएशन लेते हैं, क्योंकि इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग. तो जब भी होता है कि भाई वैल्यूएशन है तो
तो आपका फाइनल है, तो वैल्यूएशन जो है फाइनल नहीं होता, इज ओपिनियन एंड इज एस्टिमेशन. Thank you, Raju bhai. I think Raju bhai has a point, practical point. Thank you, Raju bhai. So now, what he rightly said, estimate, and even one question to all of us. The simple question: are you a professional? Are you a professional? Yes or no? Now, once you say you are a professional, so what is the definition of professional? When you say I am a professional, what is the definition of professional? चलो आपको इनकम टैक्स इज यू वांट टू फाइल ए इनकम टैक्स, आप किसके पास जाते हो? सीए के पास. सो सीए को यू से इज अ प्रोफेशनल, राइट? ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज अ प्रोफेशनल. Doctor is a professional. Now you as a banker, you are also professional. Pardon? Objective assessment of the situation. But the definition of the professional is the person having expertise, knowledge in his or her field, right? Like chartered accountant is having expertise, knowledge in filing the income tax or understanding your balance sheet. Same as a banker, you are a professional. You have a expertise, knowledge in your field. And this particular workshop will add to your professionalism. My point was to add further, when you say you are a professional, you have expertise, knowledge in your field, right? So that is what is the objective. Okay, so let's start the scientific financing and valuation as a tool for risk management. Raju bhai rightly said that prevention is better than cure. I will suggest along with this workshop to read one book. The title of the book is First Thing First, and the author is Stephen Covey. The title of the book is First Thing First, F-I-R-S-T, First Thing First. 7 habits of highly effective people, but the one of the habit is first thing first. Why first thing first? They have told in this book that you have to be proactive. Now, he rightly said that, are we investing the right amount of time before lending, that this should not become NPA. NPA is not our goal. Do you agree? NPA is not a goal. NPA is a effect. See, what are we talking today is on effect. But are we? It's a end result is a effect. But what is the root cause? What is the root cause of this NPA? The professional question is that how can we have all the time good experience of financing? Somebody said that good case study of good recovery. But why can't we talk about a good case study of a good finance realized on time and earned some value out of it? Right? When you finance, you earn some value out of it, right? Value in terms of some margin or profit or your ROI, right? Or ROS, whatever you say, financial language. So we will talk about RRCA, relentless root cause analysis. NPA is a effect. NPA is the end result. Okay, so we will focus on how do we prevent it. Now, practicing risk manager. The valuation as a tool, it's a powerful tool. The risk management of NPA is a scientific approach to the problem of NPA. The NPA should be avoided at the initial stage when you consider for the credit or finance by rigorous and appropriate credit appraisal sanctions. Now, 2 words are very important from this paragraph: initial stage and appropriate credit appraisal. I think these are the 2 areas. I always encourage and always put it this way, that review the process over here. What is your process here? Is this process is solid at the start, and this solid process is appropriate? These are the 2 key words. NPA can be arrested only through internal remedies, meaning that improving the efficiency of credit assessment. Not only efficiency nowadays, in corporate we talk effectiveness, because efficiency is output divided by input, and maximum it can be 99.99, can't be 1 and above 1. . 1. 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 1
Even you are efficient, go beyond it. Maybe if you are a branch manager or the head of the department, are you reviewing time to time? What is happening good and what are the learning lessons, right? That's what is a preventive talk I am talking. And credit delivery operations at the point of financing bank in the first instance. So Raju, you want to add something? Again, practicing risk manager should come forward with a mechanism so that rigorous appropriate credit appraisal can be done at the initial stage itself. Valuation has been one of the powerful tools, and it's again an inclusive subject. So, yeah. अच्छा, वैल्यूअर को आप जब बैंक में जो फाइनेंसिंग करते हैं तो वैल्यूअर को कब आप बुलाते हैं? It is to chartered accountants or consultants. राइट 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 अच्छा, अभी अभी जो है इनिशियल स्टेज का जो बात हुआ, वैल्यूअर का यूज आपको वॉचडॉग की तरह करना है। कोई भी फाइल आता है तो पहले वैल्यूअर को भेजो, जो भी प्रॉपर्टीज है वहाँ, भले उसको एक्चुअली क्या होता है, इतना पैसा बैंक्स फाइनेंस करती है, 5 करोड़ 50 लाख 50 करोड़ जो भी फाइनेंस करती है, लेकिन वैल्यूअर का रोल जब फाइनल होने के बाद आता है, नहीं नहीं नहीं, फाइनेंसिंग के टाइम ही, लेकिन सब डिसाइड हो जाता है कि भाई अभी सैंक्शन करने का है या सैंक्शन का टर्म है, तब वैल्यूअर का रोल आता है एक्चुअली। No, not. I am not advising to get valuation report. I am not advising my business. I am not. नहीं नहीं. What I am saying कि वैल्यूअर का सिलेक्शन बैंकर को ही करना चाहिए। उसका बैंक में कौन वैल्यूअर है, कौन पैनल में है, आप उनके साथ कितना साहब लोग, आप वैल्यूअर की ऑफिस में कितने गए हैं? हाँ, वैल्यूअर की ऑफिस में जो है कितने लोग गए हैं, कितने साहब लोग गए हैं, क्या देख ऑब्जर्व करते हैं? कोई भी वैल्यूअर की ऑफिस में जाते हैं, व्हाट यू ऑब्जर्व? कोई भी वैल्यूअर की ऑफिस में गए, आप डॉक्टर की ऑफिस में जाते हैं तो आप देखते हैं, एडवोकेट में, वैल्यूअर की ऑफिस में क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? अच्छा, अभी दूसरा दूसरा इसमें आपको थोड़ा पता चलता है, आपका नॉलेज है वो आप पूछते हैं, बराबर। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरे को हार्ट का तकलीफ हुआ है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर में क्या देखते हैं? जैसे बात हुआ, हम पहले मार्केट इंक्वायरी करते हैं कि कौन अच्छा है डॉक्टर है, बाद में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और उसका जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें कितने लेटेस्ट टूल्स है और उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, वो देखते हैं। बैंकर में जब जाते हैं और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कितना टाइम देता है। कोई भी अच्छा डॉक्टर है वो आपका हाथ पकड़ के या स्टेथोस्कोप नहीं लगाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, स्माइल फेस नहीं देगा तो आपको अच्छा लगेगा डॉक्टर। पहले आप वैल्यूअर को देखो, कोई भी ऑफिस में जाते हैं, सी टू वैल्यूअर फर्स्ट, फिर उसका पेशेंट क्या है, कैसे वर्क करता है, उसकी ऑफिस में आप आधा घंटा घंटा बैठ सके तो उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, कि वो रिपोर्ट के पीछे भागता है या वैल्यूअर क्या कैसे वर्क उसके ऑफिस में होता है। कि भाई कोई वैल्यूअर में जाए कि भाई आज इतना इतना रिपोर्ट भेज के तैयार कर दो मेरे को, आज इतना डिस्पैच करने का है, ये काम करने का है। मेरे को याद है जब 90s में ICICI चालू हुआ, मेरी ऑफिस में आया था, पूजा कॉम्प्लेक्स ऑफिस, छोटा ऑफिस था मेरा तब, तो मेरे पीछे लग गए साहब। बाद में वो उनके जो बॉम्बे से और दिल्ली से 2 बड़े साहब आए थे, मेरे पास कार्ड है, नाम याद नहीं है, साहब हम आपको दिन का इतना काम देंगे, महीना का इतना काम होएगा, महीने में ये होएगा, आपको खाली 2 पेज
पेज में देने का है। मैं क्या देने का है 2 पेज में? मैंने पूछा क्या देने का है? नहीं आपको लिख के खाली दे, नहीं देने का क्या लिख के देने का मेरे को, कि आप जो है लड़के को भेज के विजिट करवा लो और जो आता है डिटेल वो भर के मेरे हमको दे दो। मेरे को खाली डिटेल ही भर के देने का है। आपको डिटेल चाहिए तो कहीं भी मिल जाएगा, आप वैल्यूअर के पास क्यों आते हैं? आईसीआईसीआई बैंक का इतना ये हुआ, उसको खाली 2 पेज में डिटेल चाहिए थे। उनके बड़े दोनों साहब जवाब नहीं दे पाए थे मेरे को कि उनको क्या चाहिए। अच्छा, मैं बोला नो प्रॉब्लम, अभी हम कर देंगे, इतना काम होएगा, लेकिन मेरे पास तो इतना कैपेसिटी नहीं, मैं इतना रिपोर्ट चेक नहीं कर सकता। मैं मिनिमम जो है 2 से 5 रिपोर्ट का वर्क कर सकता हूँ, और मैं इतना 50 रिपोर्ट, मेरे को 100 रिपोर्ट नहीं करना है। बोले नहीं आपको इतना पैसा मिलेगा ना, ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस, कितना पैसा मिलेगा ना। मैं बोला वो मेरे को अभी भी मिलता है, और पैसा नहीं मिलता है तो लेकिन जितना मिलता है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। तो बोले इतना काम होता है बॉम्बे में ये काम। अच्छा, मैं बोला आप फी क्या देंगे? बोले 250 रुपये। बाद में 500 तक आए, 750, 750 से आगे नहीं, क्योंकि बॉम्बे में नहीं लेता है, दिल्ली में नहीं लेता है, इसलिए हमको आपको नहीं दे सकते। बोला साहब, मैं बोला मेरा इतना टाइम का एक्सपीरियंस है, आपको हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, आप इतना फाइनेंस करेंगे तो कैसे करेंगे? वो 750 रुपये का फाइनेंस पे आप रिलाई करके करते हैं। आपको कोई भी इतना बड़ा फाइनेंस करना है तो आप पहले उस पर क्यों जाते हैं? बार्गेन, वाई यू आर बार्गेनिंग द फीस, कि आपको जो काम लेना है गवर्नमेंट से ने जो स्लैब ने डिसाइड किया है, हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, मैं गलत, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन ये सब प्राइवेट बैंक में बाद में आ गया कि फीस फिक्स कर दिया। लेकिन जब लायबिलिटी आता है तो क्या आता है, वैल्यूअर का पूरा सैलरी या पूरा सेविंग चला जाता है। मैं कई वैल्यूअर को जानता हूँ कि जिसको केस हुआ है वैल्यूएशन रिपोर्ट देने के बाद, तो वो जो कोर्ट का प्रॉब्लम होता है या सीबीआई का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें पूरा कैरियर उसका ख़त्म हो जाता है। तो वैल्यूअर की ऑफिस में जो है, पहले वैल्यूअर को देखो कि वैल्यूअर कैसा है, बाद में उसका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, वो उसका पास कितना डेटा बैंक है, कैसा वर्क किया है। यू आस्क फॉर हिज वर्क कि भाई तुमने क्या क्या वर्क किया है, कौन से एरिया में वर्क किया है। मतलब ये सब बेसिक चेक है कि जो है आप फाइनेंस शुरू करते हैं उसके पहले वैल्यूअर को देखो, क्योंकि आपके उसके रिपोर्ट पे डिलाई करने वाले हैं। सेकंडली, जब भी विजिट होता है तो आप खाली उसको बोलो कि भाई आपको अभी फीस नहीं मिलेगा, आपको रिपोर्ट नहीं देने का है, जस्ट विल टेक गिव टोकन अमाउंट एज 25% ऑफ द फीस। आप विजिट करके मेरे को ओपिनियन दे दो। अच्छा, हो सके तो आप भी वैल्यूअर के साथ जाओ, जब बड़ा प्रॉपर्टी या बड़ा फाइल है, कोई भी फाइल, तो आप विजिट में जाएंगे ना, तो आपका ऑब्जर्वेशन साहब लोग का मैंने देखा है, हमारे से थोड़ा पर्सनल मैन वॉचिंग में ज़्यादा रहता है कि कस्टमर कैसे बिहेव करता है, लोनी कैसे बिहेव करता है, वो क्या कैसे ट्रीट करता है। तो पहले इनिशियल स्टेज में ही ये आप देख सकते हैं कि भाई ये तो कुछ बाद में फाइनल करो, कुछ भी आगे बढ़ना है वो बाद में आगे बढ़ो। थैंक यू। नहीं, एक्चुअली व्हाट इज द मर्सी कि सिलेक्ट आपकी जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस करके देती है कि भाई फ्रॉम सेट ऑफ दिस वैल्यू और यू हैव टू सिलेक्ट।